Morning students, I am Utkarsh Jaswal, your English literature teacher. So today I am going to explain you the first chapter of your book, which is The Little Black Boy. In previous class I provided you some images and I gave you the work to read the poem by yourself and to try to understand it by yourself. Okay, so now in this lecture I will be explaining this chapter. But before explaining this chapter, we should always know about the author or the poet. As in this case it is a poem, so the poet who wrote this poem. Okay, so the poet was, his name was William Blake. Okay, he was born on 28th November 1757 and he died on 12th August 1827. Okay, so he lived all his life in London, but 3 years of his life, that means that he lived all his life in London, but for 3 years he was away from the London. Okay, so when he was a young boy, his parents realized that he was not most interested, he was most interested in art. Okay, so when he was younger, that means when he was a child, little child, his parents realized that he was interested in art. Okay, so they sent him to painting lessons, and when he grew up he worked as an artist for a printer. Okay, so when his parents sent him for the painting lessons, it was obvious that he will become a good painter because it was his hobby and the talent was shown in him. Okay, so when he grew up he started working as a painter for a printing press, or you could say he worked as an artist for a printer. Okay, Blake was a poet, painter and a printmaker. So he was multi-talented, that means he was also a poet, a painter and a printmaker. He believed in equality and wrote poetry that could be understood by everyone. So by this we could understand that he believed in the equality. Okay, and he wrote the poem that could be understood by everyone. That is, he was very interested in the arts and painting and also writing the poem. Okay, so this poem is about the little black boy. A minute of thinking. The starting is a minute. In the starting it is written a minute of thinking. How do you feel when people stop talking to you because the color of the skin? So it is for the, you should think about that what will you feel if people will stop talking to you because of the color of the skin. Okay, so now we will start reading the poem. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I am black as I bereaved of light. So in the first para, it is written that the child is saying, my mother bore me in the southern wild. That means, I think I should explain in Hindi because, yeah, my mother bore me in the southern wild. That means that the child is saying that, मतलब वो जो छोटा बच्चा है जिसके बारे में ये पोएम लिखी गई है, लिटिल ब्लैक बॉय, वो कहता है कि माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड, मतलब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पैदा किया, मुझे मेरी परवरिश की सदर्न वाइल्ड में, मतलब साउथ की तरफ, वाइल्ड में मतलब थोड़ा जंगल टाइप का इसका गांव होगा या एरिया होगा जहाँ पर इसकी माँ ने इसकी परवरिश की, इसे पैदा किया. ठीक है, एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट. और वो बच्चा कहता है कि मैं ब्लैक हूँ. ब्लैक मीन्स दैट हिज स्किन कलर इज़ ब्लैक. ओके, बट ही इज़ ऑल्सो सेइंग, बट वो कहता है कि लेकिन मेरी सोल मतलब क्या होता है, आपकी जो अंदर की, एक तरह से आप कह सकते हो आपकी जो आत्मा होती है, मतलब वो मेरी कहता है कि वाइट है. वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, बट आई एम ब्लैक एज इफ़ bereaved ऑफ लाइट. लेकिन मेरी जो सोल है, वो कहता है बच्चा कि मेरी जो सोल है वो बिल्कुल वाइट है, जैसे कि एक एंजल की तरह है, जैसे कि एक इंग्लिश चाइल्ड होता है. मतलब इंग्लिश चाइल्ड ऑब्वियस सी बात है वाइट होते हैं तो काफ़ी सुंदर से एंजल की तरह दिखते हैं, तो उनसे कंपेयर करते हुए बोलता है वो बच्चा, हालांकि मेरा स्किन कलर ब्लैक है बट मेरी सोल बिल्कुल भी वाइट है, जैसे कि एक एंजल की होती है, जैसे एक इंग्लिश चाइल्ड लगता है. ठीक है, बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं ब्लैक हूँ एज इफ़ bereaved ऑफ लाइट. bereaved मतलब होता है कि किसी से कोई चीज़ को अलग कर देना, जैसे किसी से ले लेना. मतलब कहता है मैं लेकिन ऐसा ब्लैक हूँ, लगता है जैसे मुझे लाइट से अलग कर दिया गया है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसे, बच्चे को लगता है कि अगर उसे लाइट से दूर कर दिया गया है, क्योंकि अंधेरा होता है तो सब कुछ ब्लैक दिखता है, लाइट होती नहीं, तो बच्चा अभी छोटा है तो उसे ये समझ में आता है कि ऐसा लगता है मुझे लाइट से दूर कर दिया गया है, इसलिए मैं ब्लैक हूँ. ओके,
And the next paragraph is, my mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of day. She took me on her lap and kissed me and pointed to the east, began to say. तो फिर बच्चा आगे कहता है, माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री, मतलब मेरी माँ ने मुझे सिखाया है या पढ़ाया है या जो भी माँ ने मुझे बताया है, अंडरनीथ अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे। और सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे का मतलब है कि मुझे सूरज की गर्मी या दिन में जो गर्मी होती है उसके सामने बैठा के एक पेड़ के नीचे मेरी माँ ने समझाया है। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस मी। शी टुक मी ऑन हर लैप का मतलब होता है, लैप मतलब होता है गोद, ठीक है। तो माँ ने उस बच्चे को गोद में लिया और उन्होंने किस किया अपने बच्चे को। एंड पॉइंटेड टू द ईस्ट, और माँ ईस्ट की तरफ पॉइंट करके बोलती हैं, बिगैन टू से, लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव and give his light and give his heat away, and flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday। तो उसके बाद उसकी माँ जब उसे गोद में बैठाती है और उसके बाद बच्चे को कहती है, लुक ऑन द राइजिंग सन, मतलब जो उगता हुआ सूरज है उसकी तरफ देखो। द गॉड डज लिव, वहाँ पर गॉड रहते हैं। एंड गिव हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, और वो वहाँ से अपनी लाइट को और अपनी हीट को देते हैं। गिव अवे मतलब होना है कि फैलाते हैं या देते हैं। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कम्फर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, और जो भी फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, बीस्ट हैं, मैन्स हैं, वो सभी कंफर्ट महसूस करते हैं उस सूरज की या हीट को महसूस करके या उस लाइट को महसूस करके, और जॉय महसूस करते हैं नून डे में। ओके, सो till now 3 paragraphs have been completed and I think it will be enough for the day. Further I will explain you this chapter in the next lecture, but for today's work, your work will be to read the word meanings which is given on the back side, that is word treasure. Okay, you have to learn this and you have to write it on your notebook. Okay, you have to write the word treasure on your notebook. Okay, thank you class, and yeah, I will explain the chapter in the next class. Okay, thank you.